We welcome a student in the revision session, and we will revise it. This is the revision class for class 12 IP term 2. So here we will revise the things right from beginning. If you have any confusion, you will ask. We will revise here right from beginning. The first thing, that is database. First thing is here, that is database. This is database. Database is a organized collection of interrelated data stored together. Interrelated data stored together to serve applications. It works like a container which may contain the various database objects. ठीक है? Right? अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर देखेंगे टर्म से, यहाँ पर database is an organized collection of interrelated data. Right? It is an organized collection. ठीक है? Database is an organized collection of interrelated data. Organized collection of interrelated data. दूसरा बात हमारा आता है stored together. ठीक है? दूसरा बात हमारा आता है stored together. It and database. ये database के बारे में बात किया जा रहा है. It work like a container. It work like a container. ठीक है? It work like a container. Right? इस चीज को हम थोड़ा, ये तीनों लाइन को हम फिर से पहले समझा देते हैं. और पहले बताया गया कि it contain interrelated data. Now suppose I am going to create a data for my school. So I will have to create data. मैं दिखा रहा हूँ, रुक एग्जाम्पल देकर हम दिखाएंगे. यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि मान लो एक स्कूल के लिए डेटा क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल का. I am going to create a data, so I will need to create a data. I will need to create a store data of student detail, right? I will need to store data about the student detail where there will be a column admission number. ठीक है? Where there will be admission number, name, father name, father's name. Okay, father's name, DOB, and signature of your parent. Okay, and signature. This is one of the table. This is a table, right? एक टेबल हमारा ये है. दूसरा टेबल मान लो हमारा हो सकता है, second table of my concern will be that I need to keep your marks. तुम्हारा मार्क्स रखने का हमें जरूरत है. ठीक है? मार्क्स रखने का जरूरत पड़ा, उसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे दूसरा. ठीक है? एक दूसरा टेबल बनाएंगे यहाँ पर मार्क्स. ठीक है? मार्क्स का डिटेल रखना है, तो यहाँ पर एक दूसरा टेबल बनाए. ठीक है? इसमें हम लिखा एडमिशन नंबर. आई हैव रिटन admission number, name, exam, marks. Okay, exam, and I have written here marks. Marks 1, marks 2 रखे हुए हैं, दो टेबल. तीसरा मान लो एक और टेबल का जरूरत पड़ रहा है. वो हमारा टेबल का जरूरत पड़ रहा है तुम्हारा CCA रिकॉर्ड को रखने के लिए. ठीक है? CCA रिकॉर्ड के लिए भी एक टेबल बना लिए हैं. एडमिशन नंबर, नेम, परफॉर्मेंस, डेट ऑफ परफॉर्मेंस, रिजल्ट. ठीक है? तो देखो बच्चों, here it contain data, here it contain all the, we have created 3 tables, right? How many table we have created? One table. This is main table. It contain the main data. It contain main data. ठीक है? Master data we call it. It contain master data. Okay, it contain master data. We have another table, that is marks table. This is second table.
This is third table. In all these three tables, we are storing the detail of the student. Now, let's suppose I am storing the detail of 101, name Sweta. She has taken admission in my school. I have maintained her record here. Father's name Manoj. Date of birth 15/5/2006 and signature of her parent 102. Sony. Father's name JK and something date. Now I need to store the detail marks of Sweta. I will write here 101, name Sweta, exam unit test 1, marks 50. Okay, now here I need to store the detail of Sony. I have written Sony, date of performance, that is 15 August. Date of performance, that is 15th August 20. Result first. Okay, now what you can see? Here you can see, now here you can see that here you will come to the definition part. यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. देखो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. इट इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा which is stored together, right, to serve the application, right. I hope it is clear to you. More it will be. The definition of database. The definition of database, it is an organized collection of interrelated. I have created in my previous, I have created a 3 table. One table to store the master record. Second, to store the detail of examination marks. Third, to store the detail of CCA. Now, all these 3 data were interrelated. वो तीनों डेटा आपस में interrelated था. ठीक है? So data is stored together to serve the application. It works like a container. Now it has been said here that it works like a container. So finally you can see that in previous screen we have created a 3 table. The first table was student detail, where we kept the information about the student. In second table we have kept the marks detail. Third table we have kept the CCA detail. ये तीनों टेबल के लिए एक कंटेनर बनाया हुआ है. इस कंटेनर देखो ये आउटर है. ये तीनों टेबल एक डेटाबेस का पार्ट है. ये तीनों टेबल एक डेटाबेस का पार्ट है और इस डेटाबेस का हम नाम रख दे रहे हैं एसटीडी डिटेल. ठीक है? तो आई होप the term would be clear to you, definition would be clear to you, that database work as a container. All these 3 tables are related with each other. All these tables are interrelated. Data of these tables are interrelated. देखो यहाँ पर अभी हम जैसे इसमें दिए थे श्वेता का डाटा डाले, तो श्वेता का डाटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, रिलेटेड है. इसमें सोनी का डाटा डाले थे तो सोनी का डेटा इसमें भी है, सब आपस में इंटर रिलेटेड है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आई होप इट इज क्लियर. Most of the database store data in the form of relation called table. Most of the data, देखो यहाँ पर एक टर्म याद रखना बहुत जरूरी है कि टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशन. टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशन. ठीक है? टेबल को क्या कहते हैं? रिलेशन. All the tables are interrelated with each other. ठीक है? सारे टेबल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है? तो इस तरह के डेटाबेस को हम क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस. Now how can you, the question may be, what is RDBMS? Relational database.
Relation stand for table, and these tables are interrelated with each other. These data of these tables are interrelated with each other. Okay, I hope you got it. Then software used to manage relational database is called RDBMS. It is called RDBMS. ठीक है, अब RDBMS का एग्जांपल तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया था. Some of the example, it is Oracle, MySQL Server, Sybase, Ingress, etc. I hope this first screen is clear to you all. Now let's move to the next. Okay, the first, what are the advantages of database? The advantages of database is that database reduces data redundancy. It reduces data redundancy. What is data redundancy? Removal, duplication of data. It is called data redundancy, right? Duplication. What is this? Redundancy is nothing but it is duplication of data. ठीक है, duplication, right? It is duplication of data is also called as data redundancy. So database reduces data redundancy. Then here we have the next term, that is inconsistency. It is multiple mismatching. Multiple mismatching. Okay, it is multiple mismatching. Okay, it is multiple mismatching of data. Multiple mismatching of data is called data inconsistency. When two copies of same data do not agree to each other, this is called data inconsistency. In one word, I have told you that it is multiple mismatching of data. This is called data inconsistency. Now, when you will control the data redundancy, then inconsistency will be controlled. Database facilitate sharing of data. Data can be shared between one device to other device. Database ensures security. Database maintain integrity. Here we have another term, that is integrity. What is integrity? Integrity means rule. Integrity means rule, right? Integrity means rule. Database maintain integrity. I hope this topic would be also clear to you all. So let's move to the next. Next, here we have the database models. We have different database models. First database model is relational data model. Second is network data model. Third is hierarchical data model. Object-oriented data model. Now first come to the relational database. तो relational data model, relation अगर हम बोल रहे हैं तो रिलेशन का मतलब ये भी हम क्या बताया कि टेबल का एक नाम रिलेशन भी है. ठीक है, टेबल को हम लोग रिलेशन भी कहते हैं. और ये रिलेशंस, ये टेबल का डेटा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, तो उस तरह के डेटाबेस को हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस. क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस. इन दिस मॉडल, relational data model, data is in the form of relation. या अगर हम इसको बोलें तो डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. अब टेबल का मतलब रो और कॉलम. ठीक है, डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ठीक है, तो टेबल अगर हम बोल रहे हैं तो डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. अब भैया रो को हम लोग क्या कहते हैं? रो को हम लोग क्या कहते हैं? रो को हम लोग कहते हैं टपल. एग्जाम में आया था. रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज टपल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज record, and column is also called as attribute or field. Column is also called as attribute और field. तो भाई ये जो क्वेश्चन, ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइज हियर. ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइज हियर. डिफाइन रिलेशनल डेटा मॉडल.
क्वेश्चन में बी आस्क्ड डिफाइन रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशन बोल रहे हैं तो हम टेबल की बात कर रहे हैं। सच अ मॉडल इन विच data is stored in the form of relation and data is interrelated to each other. This model is called relational data model. Or in relational data model, the table is called as relation. The row is called as tuple. The column is called as attribute. I hope it is clear to you. Next we have that network data model. ये पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, फिर भी इसको थोड़ा ध्यान, क्वेश्चन इससे नहीं आना है, क्वेश्चन will not come from this topic, hence you can skip it, right? Question where you are not going to get question from this topic, you can skip it, right? So better we should leave it. We are doing revision for the term 2. Now come to the data model. ठीक है, data models. Here again we have, देखो relational data model. This is relational data model. देख लो भाई, अभी पिक्चर में देख लो, अभी हम जो बात बोले, क्या बोले? relational data model. Relational data model. Data is organized in the form of relation. Relation means data is organized in the form of table. तो देखो यहाँ पर data is organized in the form of table. This is, here you can see the picture of table. Okay, here you can see the picture of table. Now you see this is called row. ये क्या हो गया? row. इसको हम क्या कहेंगे? एंटिटी. सॉरी, इसको हम कहेंगे रिकॉर्ड, या इसको हम कहेंगे टपल, या इसको हम कहेंगे रो. ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखो हमारा 1 2 3 4 5. This table has got 5 columns. It is called 5 attribute. ये क्या है? 5 attributes है. ठीक है, 5 attributes. I hope it is clear to you. ठीक है, तो 5 attributes. And एक चीज और यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे कि every attribute has got a set of data. देखो अभी मान लो इस टेबल की बात करें तो नेम एट्रीब्यूट का 2 वैल्यू है यहाँ पर, अमर और कैलाश. डीओबी एट्रीब्यूट की बात करें तो इसका भी 2 वैल्यू है यहाँ पर. सिटी का बात करें, सिटी एट्रीब्यूट का भी 2 वैल्यू है यहाँ. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. फाइनली व्हाट वी हैव लर्नड हियर दैट in relational data model, data is stored in the form of relation को एक नाम और हम क्या दे सकते हैं? तो we can call it table, right? We call it table. और हम लोग क्या पढ़े? और हम लोग पढ़े कि टेबल टपल किसको कहते हैं? वी हैव लर्नड अबाउट टपल. टपल हम लोग किसको कहते हैं? रो को हम लोग टपल कहते हैं. ठीक है, कॉलम एट्रीब्यूट्स हम लोग किसको कहते हैं? एट्रीब्यूट्स. द कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. आई होप you would have understood these things. Let's move to the next. Okay, now RDBMS terminology. कम से कम एक 2 नंबर का तो सवाल इससे जरूर आएगा एग्जाम में, और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. यहाँ से यहाँ तक का जो टर्मिनोलॉजी है अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं. ठीक है, रिलेशन और टेबल इज अ टेबल इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. यहाँ पर ये बताया गया कि टेबल इज अ 2 डायमेंशनल. Why it is called 2 dimensional? While teaching Python, I have taught you that in a 2 dimensional data structure, it has the row and column both. इसमें क्या होता है? रो भी होता है और कॉलम भी होता है. इधर ये देखो रो हो गया, ये रो हो गया, और ऐसे देखे तो ये कॉलम हो गया. ठीक है, ये तो 2 dimensional data structure has both row and column both, right? And now in relational data, in relation or table 2 dimensional like arrange row and column, it has the following property.
column is homogeneous. Homogeneous. Homo means homo. Homo. Homogeneous. Homo means same. Homo means same. Right? Homogeneous term says that it is same. Right? Each column assigned a unique name. देखो यहाँ पर होमोजेनस कहने का मतलब ये है, अभी हम इसको पहले वाले विंडो में चलेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर हम कह रहे हैं, देखो यहाँ पर जैसे डीओबी है तो इसमें दो 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 वैल्यू है इसका, तो दोनों एक ही तरह का वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि ये डेट है और ये वाला नंबर है, ऐसा नहीं है। होमोजेनस एक जैसा है, ठीक है, एक जैसा वैल्यू है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। होमोजेनस टर्म इज क्लियर टू यू। नाउ एवरी एट्रीब्यूट हैज गॉट अ नेम, ठीक है, सबका एक अपना नाम है। ये वाले एट्रीब्यूट का नाम क्या है? नेम। ये वाले एट्रीब्यूट का नाम क्या है? एड्रेस। ये वाले एट्रीब्यूट का नाम क्या है? डीओबी। अब इस एट्रीब्यूट का वैल्यू कितना है? दो वैल्यू है, दोनों एक जैसा है, इसलिए इसको होमोजेनस कह रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। ऑल रोज ऑफ ए रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। देखो यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है? ऑल रोज ऑफ ए रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ऑल रोज ऑफ ए रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। अब मान लो डिस्टिंक्ट, देखो यहाँ पर इस बात को भी हम लोग यहां से समझ लेंगे, ठीक है। वी विल लर्न दिस थिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक हम नया रो डाल देते हैं, ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं अमर, और इसका एड्रेस कर दे रहे हैं वही 2/3 जॉब, ओके। डीओबी इसका भी डाल दे रहे हैं 1490, ठीक है, 90, ठीक है, 1490। सिटी इसका भी डाल दे रहे हैं कानपुर। फोन नंबर तो हम चलो चेंज होगा ही होगा, 3545। तो फाइनली यू हैव सीन दैट रो इज डिस्टिंक्ट। रो क्या है? डिस्टिंक्ट है। रो तुम्हारा यूनिक रहता है, हर रो यूनिक रहता है। अगर फोन नंबर भी सेम रहेगा तो उसका प्राइमरी की में उसका प्राइमरी की वाला कॉलम अलग रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Next we have domain. It is a set of possible values. क्या है डोमेन का मतलब? डोमेन का मतलब है set of possible values. Now let's see here the set of possible values. The set of possible values is here. The set of value is here. यहाँ पर set of value ये है। मान लो हमारा एक हम यहाँ पर दे देते हैं sex, एक कॉलम डाल देते हैं sex, तो इसमें m या f जब भी डालेंगे तो m या f ही डालेंगे। m and f is possible set of values. m and f is called domain. टुपल तो समझा दिए, ठीक है, टुपल टपल तो समझा दिया, एट्रीब्यूट समझा दिया। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में प्री बोर्ड में आया था। डिग्री और कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट इन अ टेबल, इट इज कॉल्ड डिग्री, एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड in a table, this is called cardinality. This is called cardinality. I hope it is clear to you and it must not be forgotten.